Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 14th lecture of this series of Indian Evidence Act. We are continuing with the section 165 of the Indian Evidence Act, and in this lecture we start with a new issue. So write down the case. Raghunandan versus State of UP 1974 Supreme Court. Raghunandan versus State of UP 1974 Supreme Court. अब इसमें जो इशू था that is about the 162 of the CRPC. 162 of CRPC. No statement made by any person to a police officer in the course of investigation. An investigation under this chapter. This chapter, chapter 12. Chapter 12 of the CRPC. Under this chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. So, no statement made by any person to a police officer in the course of investigation under this chapter. तो इसका मतलब है कोई ऑफेंस था जिसका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 सीआरपीसी में चल रहा है। उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया जो कि राइटिंग में रिड्यूस किया गया। ए पर्सन मेड ए स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर विच इज रिड्यूस टू राइटिंग। शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड। उसको साइन नहीं करोगे, वो व्यक्ति साइन नहीं करेगा अगर वो राइटिंग में किया गया है। ये हमारा कंसर्न है। बी साइंड बाई द पर्सन मेकिंग इट, nor shall any such statement or any record thereof, such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record. अब स्टेटमेंट तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। सो इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाई द पर्सन मेकिंग इट। तो एक तो साइन नहीं होना चाहिए, एक ये पॉइंट हो गया इसमें। एंड दिस इज नॉट आवर कंसर्न फॉर दिस टॉपिक। नॉर सेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ, वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज, और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड। स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एंड रिकॉर्ड देयर ऑफ इज refers to written statement. Nor shall any such statement or any record thereof. Such statement means oral statement and record thereof means writing wala statement. Whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. अब मान लो, suppose I am accused in some case and there is an investigation going against me with respect to that particular offence. मैं accused हूँ किसी केस में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस केस से रिलेटेड पुलिस ऑफिसर ने मुझसे सवाल पूछे और मैंने उसके कुछ जवाब दिए। And suppose that was recorded in writing. Now tomorrow I appear into the court as an accused and the trial is going on against me. Or suppose I am not accused, I am a witness. अब suppose I am a witness और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे 161 सीआरपीसी के अंडर, और उसको उसने 161 थर्ड पैराग्राफ में रिकॉर्ड कर लिया। 161 में आपका एग्जामिनेशन होता है, तो विटनेस को एग्जामिन किया और थर्ड पैराग्राफ 161 सीआरपीसी में विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब जब ट्रायल चलेगी तो यही विटनेस कोर्ट में प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर अपीयर होगा। सपोज आई एम विटनेस, आई वुड अपीयर into the court as a prosecution witness in the trial of that particular offense.
Now the point of our concern is that the statement which was made by me earlier to the police officer which is recorded can be used to corroborate कि देखो पहले भी इसने ऐसा लिखवाया था और आज भी वो ये स्टेटमेंट ये कोर्ट में कह रहा है, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। द आंसर इज नो। तो ये जो फर्स्ट पैरा है इस सेक्शन का वो कह रहा है दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट इट इज प्रोवाइडेड हियर इन आफ्टर। और वो प्रोवाइजो में लिखा है, क्या लिखा है कि उस स्टेटमेंट को अपोजिट पार्टी उस प्रोसिक्यूशन विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकती है। जो भी स्टेटमेंट विटनेस ने पहले दिया था उसके उस स्टेटमेंट को जब विटनेस कोर्ट में खड़े होकर बयान देता है और वो बयान पुलिस को दिया था, तो पुलिस प्रोसिक्यूशन उसको उस विटनेस के बयान से कॉरोबरेट करने के लिए तो इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, लेकिन डिफेंस अपोजिट पार्टी विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस स्टेटमेंट का यूज कर सकती है कि पहले इसने कुछ और कहा था और अब कुछ और कह रहा है। और दूसरा इस्तेमाल हो सकता है इसका डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में और तीसरा डिस्कवरी स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो देयर आर 3 पॉसिबल यूजेज of such statements which are made to the police. One is the contradiction by the defense, second is the dying declaration and the third is the discovery statement. और उसके अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। That is very clearly written. And our issue is can the court, ध्यान से सुनिएगा 162 अभी पूरा नहीं समझ रहे हम, तो इसमें साइन वाइन वाला पार्ट है वो डिटेल में अभी नहीं देख रहे हम। The concerned part is only this, that there is a prohibition that such previous statement made to the police cannot be used for any purposes except allowed under section 162 crpc, and 3 purposes I told you, that the contradiction can be done by the defense on that basis, then it can be used as dying declaration, it can be used in डिस्कवरी स्टेटमेंट। दीज 3 यूजेस, इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। नाउ द क्वेश्चन इज डज दिस प्रोहिबिशन, जो पुलिस पर ये प्रोहिबिशन है, प्रोसिक्यूशन पे जो ये प्रोहिबिशन है, डज दिस प्रोहिबिशन अप्लाइज टू कोर्ट ऑल्सो। सपोज द कोर्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू द विटनेस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस। कोई ऐसा क्वेश्चन कोर्ट पूछना चाहता है 165 एविडेंस एक्ट में उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया प्रीवियस डॉक्यूमेंट, तो क्या कोर्ट पर भी ये रेस्ट्रिक्शन लगेगा या इज द कोर्ट इज फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस ऑफिसर। अब यू सी 162 इज ए जनरल प्रोविजन and 165 is a special provision, plus whatever restrictions are there on the powers of the court under 165 of Evidence Act, that is expressly provided in 165 itself, in 165 itself proviso में दे रखे। और अगर आपको कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाना होता तो 165 में ही आप लिख सकते थे और आपने नहीं लिखा। प्लस कोर्ट का पावर है टू डू द कंप्लीट जस्टिस इन द केस, तो उसके ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं उतने ही लागू करोगे, उसको वाइड इंटरप्रिटेशन दोगे। वॉट एवर नॉट प्रोवाइडेड इन 165 दैट विल नॉट अप्लाई इन दिस अपॉन कोर्ट, एंड देयरफॉर 162 विल नॉट restrict 162 CRPC will not restrict the powers of the court under 165 of Evidence Act. That is what held in this case. So write down section 162 CRPC clearly restricts the evidentiary use of any statement made by witness to the police officer in the course of investigation, excepting the cases where is allowed in 162 itself, excepting the cases where it is allowed in under section 162 CRPC itself.
The question raised in the present case was as to whether the restriction of Section 162 CRPC applies even upon the powers of the court under Section 165 Indian Evidence Act. It was held that Section 162 CRPC is a general provision and 165 Evidence Act is a special provision, and therefore Section 165 Evidence Act prevail upon Section 162 CRPC. Moreover, Section 165, in the light of its policy and purpose, shall be given the widest possible interpretation, and whatever restrictions are there, they are provided under Section 165 Evidence Act itself. Thus, there is no need to import any additional restriction in the form of Section 162 CRPC. मतलब 162 CRPC नहीं लगेगा, तो कोर्ट अगर चाहे तो एक्यूज्ड या विटनेस के प्रीवियस स्टेटमेंट के बेसिस पर सवाल पूछ सकता है. Therefore, the court can ask questions to the witness or to the accused, even on the basis of previous statements made to the police in the course of investigation by such witness or such accused, by such witness or such accused, and an objection of Section 162 CRPC will not be sustained in such a case. Sustained in a such a case. तो ऐसा ऑब्जेक्शन अगर कोई करे 162 CRPC का कि क्वेश्चन अलाउड नहीं होगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा. So for this issue, that's it for this issue. Now the next is Section 311 CRPC. We have to see with Section 165 Evidence Act. We have to see the complementarity of the Section 311 CRPC and 165 of Evidence Act. So see 311 of CRPC. Any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this code, under the CRPC, summon any person as a witness, or examine any person in attendance. Means if a person is there in the court, summon any person as a witness or examine any person in attendance. Means if a person is there in the court, his attendance needs in the court, then the court can examine that person. Or if that person is not present into the court, then the court can issue a summons to that person and make him present into the court and then examine that person. Any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness. तो कई बार आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में बीच कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और बीच में कोई बोलता है कि जज साहब मुझे कुछ कहना है, बीच में से उठकर इन पब्लिक. तो प्रोसीडिंग्स चल रही है और वहाँ पर बीच में अदर पर्सन्स भी बैठे हैं और उनमें से बोल रहा है कोई कि मुझे कुछ कहना है. तो जज साहब ने बुला लिया उसको, क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहा है, तो बुला लिया और कहा कि जो कुछ कहना आप यहाँ आकर कहिए, कटघरे में आकर कहिए जो कुछ कहना आपको. सो दैट इज लाइक दिस, दो नॉट समन्ड एज विटनेस. एनी कोर्ट may at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined. And the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. So that is a guideline, ये लास्ट में लिखा है. And the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. अगर ध्यान से पढ़ो आप इसको अगर, तो they are not talking about the examination as such, they are talking about the summoning.
और ध्यान रखना, एक तो होगा विटनेस का एग्जामिनेशन, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए विटनेस कोर्ट में आएगा तभी तो उसका एग्जामिनेशन करोगे, तो एग्जामिनेशन के लिए सम्मन भी तो करना पड़ेगा। सो द अदर पार्ट इज द समनिंग ऑफ द विटनेस, एंड द समनिंग पार्ट इन क्रिमिनल मैटर्स फॉल्स अंडर 311। किसी विटनेस को सम्मन करना सीआरपीसी में इट विल फॉल अंडर 311। किसी विटनेस को आप सम्मन करके एग्जामिन कर सकते हो, और उसका एग्जामिनेशन कहाँ होगा? बाय द कोर्ट अंडर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट। सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन दिस टू सेक्शंस। ध्यान दीजिएगा, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट द पर्टिकुलर विटनेस ought to have been called and ought to have been examined and which the party has not done। अब मान लीजिए एक केस में प्रोसिक्यूशन ने एक केस डायरी प्रेजेंट किया कोर्ट को, और केस डायरी में बहुत सारे विटनेसेस के नाम लिखे गए। केस डायरी में पूरा डिटेल्स लिखते हो, और उसमें पाया गया कि 10 विटनेसेस के नाम हैं केस डायरी में, और प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 8 विटनेसेस को बुलाया। मीन्स प्रोसिक्यूशन हैज प्रेजेंटेड 8 विटनेसेस एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस, and there are 2 more witnesses which are examined by the police, but they are not presented as a prosecution witness, not called as prosecution, and the court finds that these 2 witnesses may throw some light upon the entire case. According to its prudence, the court finds that these 2 witnesses are important. So in that case, the court will issue summons to those witnesses under section 311 of CRPC, and since such witnesses are called directly by the court itself, they will be called court witnesses। क्योंकि उनको किसी पार्टी ने नहीं बुलाया, कोर्ट ने बुलाया है, so they will be called court witnesses, and once they appear in the court, now the court can examine them where 165 Evidence Act। So that is one example that the witness may be summoned by the court itself suo moto on its own, and that witness will be called the court witness, and that witness will be examined by the court itself. If the court examine the witness under 165, then the party concerned does not have the right to cross examination, nor having the right to object, and there the court may allow the cross examination. Otherwise, if not allowed, you cannot cross examine the witness as a matter of right. So that is one example where 311 applies, but जरूरी नहीं है कि 311 में सिर्फ कोर्ट अपनी मर्जी से ही बुलाएगा, पार्टी भी बुला सकती है। अब मान लो ट्रायल लगभग खत्म हो चुका है और लास्ट के स्टेजेस हैं, और इस स्टेज पर प्रोसिक्यूशन को लगता है मुझे एक विटनेस को बुलाना चाहिए, लास्ट का स्टेज है, और प्रोसिक्यूशन को लगता है कि मुझे किसी विटनेस को बुलाना चाहिए। अब सीआरपीसी में जो स्टेज था जहाँ पर विटनेस को सम्मन करवा सकता था पहले, वो स्टेज क्रॉस हो चुका है, और अब अगर उसको विटनेस को बुलाना है तो वो 311 का एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में, दैट आई वांट सो एंड सो विटनेस टू बी सम्मन्ड। सो दैट इज आउट ऑफ टर्न, calling of that witness out of turn, because the concerned portion of the trial where the witness can be summoned, that is over, and therefore you will apply for the summoning of that witness under section 311, and on his application the court will issue summons to the witness, and the witness will appear. Now this witness is not a court witness. This witness is a prosecution witness because the prosecution has put the application. Now such a witness will be examined by whom? जिसने बुलाया है वो एग्जामिन करेगा, अगर प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है तो प्रोसिक्यूशन will examine and the defense will cross examine. So such a witness can also be examined by the court. Such a witness also be examined by the court. Such a witness also can be examined by the court. कोर्ट भी ऐसे विटनेस को एग्जामिन कर सकती है। So obviously the prosecution or defense, whoever called the witness will examine, opposite party will cross examine. So एक पार्टी तो एग्जामिन करेगी, but the court still has the power under 165 to put its question to said witness,
बट इस विटनेस को हम कोर्ट विटनेस नहीं कहेंगे। इन दिस एग्जाम्पल दिस विटनेस विल बी कॉल्ड द विटनेस विच इज कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। सिमिलरली डिफेंस भी बुला सकता है विटनेस को, देन इट विल बी कॉल्ड द डिफेंस विटनेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज अ विटनेस, prosecution witness, and he was called into the court. Then he was examined, then re-examined, and cross-examined everything. Then he has gone back. Now the other party applies, the defense applies that I want to further cross-examine that witness. अब उसका एप्लीकेशन डालेगा वो 311 में, and the court may allow that the witness will be called again and the defense will further cross-examine him. Here also the court has the power to ask questions under 165. कोर्ट का पावर तो हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने अपने लिए नहीं बुलाया, डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक विटनेस एग्जामिन होकर जा चुका और कोर्ट को बाद में ध्यान आया कि मुझे उससे 2-4 सवाल पूछने चाहिए थे, तो कोर्ट खुद उस विटनेस को एग्जामिन करने के लिए रीसम्मन कर सकता है, and the witness will be called back to the court. अब in this situation also, even though the court itself called him again, ये कोर्ट विटनेस नहीं कहलाएगा, ये विटनेस ओरिजिनल पार्टी का ही होगा, बिकॉज इन बिगनिंग इट वाज कॉल्ड बाय सम पार्टी ओनली, either by the prosecution or the defense. तो विटनेस तो उसी पार्टी का माना जाएगा, लेकिन अब जब वो अपीयर होगा कोर्ट में तो कोर्ट 165 वाले सवाल उससे पूछ सकती है। तो ये जो विटनेस को बुलाना पहली बार, या फिर कोर्ट विटनेस को खुद कोर्ट द्वारा बुलाना, या पार्टी के एप्लीकेशन पर किसी विटनेस को बुलाना, या पार्टी के एप्लीकेशन पर किसी विटनेस को दोबारा बुलाना, या फिर कोर्ट द्वारा खुद बुलाना ताकि उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सके, खुद बुलाना ताकि उसको एग्जामिन किया जा सके। ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज अंडर 311। एंड व्हेन यू कम टू एग्जामिनिंग द विटनेस, तो वो एग्जामिनेशन 311 CRPC में नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी देयर इन द एविडेंस एक्ट। व्हेन द कोर्ट एग्जामिन्स 165 एविडेंस एक्ट। व्हेन द party cross examines or the party examination in chief, there is provisions related to examination in chief and cross examination 137 etc. in evidence act, and that is where the complementarity lies, that a witness has to be examined in the interest of justice to decide the case effectively properly. That will be done under the evidence act, and for that purpose the witness has to be summoned before the court, and that summoning process will lie under 311, and that is where the complementarity lies. क्योंकि जब तक बुलाओगे नहीं एग्जामिन कैसे करोगे, तो बुलाने का जो पावर है वो 311 में है और एग्जामिन करने का पावर बाय द कोर्ट इज 165। सो एक बार रीड इट अगेन। एनी कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine. अब recall means what? To call him again, वापस बुलाना। Recall and re-examine any such person if his evidence appears to be essential to the just decision of the case. So इसमें हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल was the witness was not summoned by any of the parties but the court suo motu summons the witness। बताइए उसको क्या बोलेंगे, कोर्ट विटनेस। अब इसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, कोर्ट विटनेस का एग्जामिनेशन हमेशा कोर्ट करता है, ये ध्यान रखना, अंडर 165 एविडेंस एक्ट। अब क्या इसका क्रॉस हो सकता है,
हो सकता है बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये पहला सिचुएशन है। A witness is not summoned by either of the parties and the court on its own prudence summons the particular witness at any stage of the proceedings. That witness shall be examined by the court itself under 165 Evidence Act, and the cross-examination of that witness will be done by the opposite party only with the permission of the court. अब अपोजिट पार्टी कौन सी रहेगी उस विटनेस के लिए? अपोजिट पार्टी वो रहेगी जिसके डिसफेवर में वो बयान करता है। इट मे बी प्रोसिक्यूशन और इट मे बी डिफेंस। तो ये तो हो गया सुओ मोटो कोर्ट विटनेस। नाउ द अदर इज अ विटनेस इज अ पार्टीज विटनेस। A witness was a party's witness. Party's witness was examined and went back. पार्टी का विटनेस था, एग्जामिन हो चुका और वापस जा चुका। अब उस विटनेस को रिकॉल करने की बात हो रही है। That witness can be recalled. अब रिकॉल कौन कर सकता है? इसके लिए दो प्रोसेस हैं। एक तो कोर्ट सुओ मोटो रिकॉल कर सकता है या फिर दूसरा ऑन द पार्टीज एप्लीकेशन। कोर्ट सुओ मोटो रिकॉल करेगा या फिर दूसरा द पार्टी विल अप्लाई बाय एप्लीकेशन। पार्टी बोलेगी कि मुझे फर्दर उसका एग्जामिनेशन करना है या फिर क्रॉस एग्जामिन करना है या री एग्जामिन करना है। मीन्स पार्टी ने अप्लाई किया फॉर द एग्जामिनेशन, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए, और या फिर कोर्ट को लगता है कि मैं खुद उससे सवाल पूछूंगा, तो कोर्ट ने सुओ मोटो रिकॉल कर लिया टू आस्क क्वेश्चन अंडर 165। अब पहली बार में तो वो पार्टी का विटनेस था इन दिस सिचुएशन। अब फर्दर एग्जामिन करने के लिए कोर्ट उसको सुओ मोटो कॉल कर लेता है या फिर किसी पार्टी द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई। अगर कोर्ट सुओ मोटो सम्मन करेगा या रिकॉल करेगा, then the court will ask question under 165. The court will ask question under 165. और अगर पार्टी के एप्लीकेशन पर रिकॉल किया then what? Then the party will examine plus the court may also examine under 165 एविडेंस है। इस सिचुएशन में तो कोर्ट अगर कोर्ट ने खुद बनाया तो कोर्ट करेगा, कोर्ट विल एग्जामिन। बट इफ द पार्टी पुट्स द एप्लीकेशन then the court still have the power to examine under 165. So ये दो situations हो गई। पहली वाला तो witness not called by any party but the court itself called it, that is suo moto summoning witness, and the court shall examine it under 165, and it may be allowed by the court to cross examine by the opposite party on those questions. And the other one says the witness is a prosecution witness or defense witness or a plaintiff witness or a defendant witness who is examined, cross-examined and went back. Now there can be two situations. The court may suo moto on its own decide that I will examine him under 165. So when the court summons the witness again, recalls the witness, then obviously the court shall examine him under 165, and the cross-examination may be or may not be allowed by the court. Cross-examination may or may not allowed by the court in this situation for the question which is asked by the court. And the second situation is the party who puts an application that I want to call the witness again and I want to cross-examine him, and for that obviously the court can always summon the witness upon the application of the party. तो इस सिचुएशन में एग्जामिन कौन करेगा? The party will examine, but yes, the court always has the power of 165. Court always holds the power of 165 to ask any question to that witness. तो वो पावर तो कोर्ट के पास हमेशा होगा। And now the third situation is, पहले वाले में तो कोर्ट ने अपनी मर्जी से बुलाया पहली सिचुएशन में, दूसरे वाले में एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन वो सब हो चुका है, इसमें दोबारा बुलाया गया है, रिकॉल किया गया है।
अब कोर्ट ने रिकॉल किया या पार्टी ने रिकॉल किया है, बट रिकॉल किया गया है। अब थर्ड सिचुएशन इज वेयर द विटनेस नेवर कॉल्ड, विटनेस कभी बुलाया ही नहीं गया था। द विटनेस वॉज नेवर समन्ड। नाउ अ पार्टी अप्लाइज फॉर द समनिंग ऑफ द विटनेस। पार्टी ने एप्लीकेशन डाला कि मैं इस विटनेस को एग्जामिन करना चाहता हूँ। पहले उसने नहीं बुलाया था, लेकिन अब वो उसको बुलाना चाहता है फॉर एग्जामिनेशन। इन द थर्ड सिचुएशन विटनेस वॉज नेवर समन्ड एंड नाउ द पार्टी अप्लाइज फॉर समनिंग द विटनेस। पार्टी ने एप्लीकेशन डाला कि मैं इस विटनेस को एग्जामिन करना चाहता हूँ। पहले उसने नहीं बुलाया था, लेकिन अब वो उसको बुलाना चाहता है फॉर एग्जामिनेशन। अब जैसे प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन स्टेज पर ही बुलाएगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज पे बुलाएगा प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया एंड द विटनेस वाज नॉट कॉल्ड, कोई विटनेस जिसको आप बुला रही है उसको नहीं बुलाया प्रोसिक्यूशन ने। फिर उसके बाद डिफेंस एविडेंस हो गया। लास्ट में द प्रोसिक्यूशन पुट्स एन एप्लीकेशन टू कॉल द विटनेस दैट आई वांट टू कॉल मिस्टर एक्स एज ए विटनेस। आफ्टर द डिफेंस स्टेज, defense evidence stage gets over. So after completion of the prosecution witness stage, defense witness stage, now you want to summon the prosecution witness. It may be permitted. It may be permitted. So there I said that witness was never summoned and the party applies for the summoning of the witness. Here who will examine? The party will examine. जो एग्जामिन करेगा पार्टी करेगा। ऑब्वियसली द अपोजिट पार्टी विल क्रॉस एग्जामिन। लेकिन क्या कोर्ट के पास 165 के पावर होंगे? इट विल ऑलवेज हैव इट। द कोर्ट ऑलवेज हैव द पावर ऑफ सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट एंड 165 में द कोर्ट कैन ऑलवेज एग्जामिन द विटनेस। तो ये तीन सिचुएशंस हैं वेयर विच आर फॉल अंडर सेक्शन 311 ऑफ CRPC. So read it once again. Any court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this code CRPC, summon any person as a witness or examine any person in attendance. तो ये पार्ट आप समझ गए कि किसी भी व्यक्ति को आप विटनेस की तरह बुला सकते हो, और या फिर विटनेस की तरह सम्मन नहीं भी है और कोर्ट में प्रेजेंट है तो आप उसको वहीं की वहीं एग्जामिन भी कर सकते हो। Though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined. And the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. तो ये जो वाला पार्ट है, that is the guideline that the court shall summon or re-summon the witness whose evidence appears to be essential for the decision of the case, essential just decision of the case, essential for the proper decision of the case. तो अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, if you file an application that so and so witness shall be presented, shall be summoned. Suppose the prosecution files an application after the defense evidence gets over, then the defense may argue that the prosecution has committed a mistake earlier by not summoning that witness, whereas the defense knew about that witness but did not summon the witness, so that is a mistake. And now after the defense evidence, prosecution is trying to rectify that mistake by getting the witness summoned. So can the court allow the party to rectify its mistake? So the point is, the court cannot allow for mere a rectification purpose, but if the court finds that the testimony of a particular witness is essential for the just decision of the case, then the court shall allow. वही लिखा हुआ है, court shall summon and examine. तो ये मेन पॉइंट है आपका 311 में जो डिस्कस करना है। एक विटनेस है जो आपने नहीं सम्मन करवाया उस समय, जिस समय सम्मन करवाना चाहिए था, वो स्टेज थी, उस समय तो आप उस स्टेज पर तो मिस कर गए, और बाद में आपने एप्लीकेशन डाला उस विटनेस को सम्मन करने के लिए,
तो अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि आप अपनी गलती सुधार रहे हो। तो इसी कारण के लिए आपको इस स्टेज पर वो विटनेस अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट ने पाया कि उस विटनेस को बुलाना जरूरी है क्योंकि उसका टेस्टिमनी उस केस के प्रॉपर डिसीजन के लिए जरूरी है, तो फिर कोर्ट उस विटनेस को बुलाएगा इवन इफ इट फॉल्स इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इवन इफ इट अमाउंट्स टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक। कोर्ट उस विटनेस को बुलाएगा। सो मेन पॉइंट जो इसमें है वो रेक्टिफिकेशन वाला ही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट a general dictation. Write down a case. Idar and others versus Abida and others 2007 Supreme Court. It was held that Section 311 CRPC is an enabling provision and Section 311 CRPC and Section 165 Evidence Act together provides for the rule of best evidence. Section 311 in criminal matters enables the court to summon a witness, whereas Section 165 Evidence Act provides for the special power to examine the witness. These two provisions are complementary to each other, and they together would help in attaining the ends of justice in the case. तो सम्मन करना और एग्जामिन करना दोनों मिलकर ही तो फाइनल जस्टिस करवाएगा। सम्मन ही नहीं कर पाओगे तो एग्जामिन क्या करोगे, और सम्मन कर पाओगे एग्जामिन नहीं कर पाओगे तो उसका सम्मन का फायदा क्या। राइट डाउन द नेक्स्ट पैराग्राफ। Section 311 CRPC has to be seen in two parts. First part uses the word may, whereas the second part uses the word shall. In the first part, the court is enabled to summon or resummon, etc. the witness. Court is enabled to summon, resummon the witness. But the second part laid down a mandatory guideline, that is, all such witness shall be summoned or resummoned whose testimony is found to be essential for a just decision of the case. तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे हर विटनेस को आप सम्मन करोगे या रिसम्मन करोगे जिसको कि उस केस के जस्टिस के लिए, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए जिसके टेस्टिमनी की जरूरत है। सो दैट इज द गाइडलाइन। तो अगर किसी विटनेस को अगर कोई पार्टी वैसे ही बुला रहा है and the court finds that it is not essential to summon that witness for the proper decision of the case, the court will refuse the application or dismiss the application of 311. Therefore, if the court finds that the particular witness examination is not essential for a just decision of the case, then the application shall be dismissed. अब एक और केस लिखिए आप, that is Zahira Habibullah Sheikh versus State of Gujarat 2004 Supreme Court. अब जहीरा शेख के दो केसेस हैं, एक 2004 है, एक 2006 है। Our concern for here is 2004 वाला केस। 2006 वाला केस that is about forgery of false evidence. अब this case was related to गुजरात में जो बेकरी में वो मसाकर हुआ था इन गुजरात राइट्स। There was a factory, a bakery, and the entire night the sacking on the premises, the killing, injuring people went on, which was going on inside the bakery, and there was some eyewitness in the bakery who saw that entire thing happening, and they are somehow escaped or hidden themselves, so they were able to survive, and Zahira Sheikh is one of them. And after that, when the trial took place in the trial court, in the session court in Ahmedabad, and in the trial most of the witnesses either they turned hostile or they did not appear at all, and therefore the accused was acquitted. Therefore the accused were acquitted. और जहीरा शेख का इसमें बयान दर्ज नहीं हुआ था इन द ट्रायल कोर्ट। जहीरा शेख का बयान दर्ज नहीं हुआ था बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड एंड शी नॉट केम फॉर
giving the testimony, even though she was a star witness. Star witness मतलब she was a very important witness, या फिर ये कह लो she was a eye witness. जितने भी आई विटनेसेस होंगे उनको स्टार विटनेस माना जाता है. Zahira Sheikh was also a eye witness and she was a star witness. अब ट्रायल कोर्ट में तो प्रोसीडिंग्स हो गई. The matter went to the appeal to the high court. Matter went to the appeal in the high court. Now the National Human Rights Commission plus also the prosecution, they applied in the high court for the recording of the evidence of the Zahira Sheikh. और उसके लिए उन्होंने 311 का एप्लीकेशन लगाया और साथ में 391 का एप्लीकेशन लगाया. और 311 तो अभी अभी आपने पढ़ा. और 391 talks about the recording of the additional evidence by the appellate court. appellate court अगर चाहे तो अपील के स्टेज पे भी कुछ नए एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकता है. इन्होंने 311 का एप्लीकेशन लगाया सम्मन के लिए कि आप उसको सम्मन करके बुलाओ और एग्जामिन करो. और क्योंकि अपलेट स्टेज पर मैटर है तो 391 का भी लगा एप्लीकेशन, क्योंकि एडिशनल एविडेंस लेने का पावर है कोर्ट के पास, अपीलेट कोर्ट के पास. अब अपॉन दिस एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने मना कर दिया. हाई कोर्ट हेल्ड that this lady has to appear in the trial court and she has not appeared there, so now she cannot be summoned. And the High Court wrongly took the plea of 386 crpc and held that in appeal that the appellate court only has to rely upon the evidences which are proved in the trial stage. So they have rejected the application. Then, after the rejection of the 311 and 391 application, the order of the High Court upon that application that was challenged in the Supreme Court. The prosecution and the National Human Rights Commission, they went to the Supreme Court, and the Supreme Court clearly held that 391 is a special provision, and if the court finds that for the interest of justice some more evidence needs to be recorded in the appellate stage, then the court shall do that. And as far as for 311 is concerned, the court clearly held that 311 is complementary to 165, and these two provisions are most important provisions of the Evidence Act in order to do complete justice. And therefore, whatever be the reasons that she not appears in the trial court, the ends of justice requires that she is an eyewitness. She should allow to give the testimony at least at the appellate stage. तो सिर्फ इस वजह से उसने पहले अपने आप को अपीयर नहीं करवाया था, तो अभी उसका एविडेंस लेने से हम मना नहीं कर सकते. The court held that the latter part of the 311 clearly says, and Supreme Court gives the guideline that you shall, be it a trial court or be it a appellate court, you shall allow the summon of the witness if it appears to be essential for the ends of the justice. जिसमें यह भी ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि अब आप अपलेट स्टेज में बुला रहे हो तो आपने उस विटनेस को, ज़हीरा शेख को, ट्रायल कोर्ट में ना बुलाकर गलती की. You could have someone at the trial stage. You did not do that, and now you are calling her at the appellate stage. Is it not a case of rectification of the mistake? And there the Supreme Court held that it may be a rectification of the mistake, but that is not the only ground. The main ground is whether the examination of that witness is essential for the ends of justice or not. And if yes, then even if it amounts to the rectification of mistake, the witness can be summoned and examined for the ends of justice. मतलब रेक्टिफिकेशन करके आप अपनी गलती को सुधार भी अगर रहे हो, फिर भी एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए अगर जरूरी है, तो गलती का सुधारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एंड्स ऑफ जस्टिस. एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए द विटनेस विल बी समन्ड. सो राइट डाउन फॉर दिस लास्ट पॉइंट. Upon this last point, Section 311 CRPC has to be
read complementary complementary with Section 165 Evidence Act for the interest of justice, merely because the witness was not summoned earlier by the party and now it would amount to a ratification of mistake. The court cannot dismiss the application even if it amount to a ratification. The witness shall be summoned if it was essential in the interest of justice to do so. So that is what held in this case. One of the point is this. Now write down a case. इस पे हम एक मॉडल छोटा सा मॉडल आंसर देखेंगे दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इन मेंस. यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली वर्सेस फतेह सिंह SINH फतेह सिंह मोहन सिंह चौहान 2006 Supreme Court. Write down the as a question or the facts of this case. The accused was charged of committing murder of the deceased along with the other co-accused. During a bail application, the accused had clearly raised point that he was not present on the spot at the time of murder. Rather, he was with the district collector in his office along with some other officers. At the trial stage, the prosecution did not examine the district collector or his officers. The defense rather proved the plea of alibi by proving the testimony of the other officers. The prosecution now files an application of 311 crpc for the summoning of the district collector to counter the plea of alibi. The defense objects by contending the summoning the district collector, the summoning of the district collector. Now would डिफेंस ने ऑब्जेक्शन ये कहकर उठाया that by the contention that summoning of the district collector now would amount to a ratification of mistake by the prosecution and hence it shall not be allowed. Now decide the contention. So we would see the answer writing format in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you for watching lecture.